हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द मोशन ऑफ कंटिन्यूस मैटर. Now, whenever we study about the kinematics of moving fluid, we are asked to derive this equation of continuity for the motion of continuous matter, and also we need to show that d by dt of delta v is equal to del dot v delta v for a fluid element. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है. सिंस फ्लूइड में ऑब्वियसली विल डील विद वॉल्यूम, thus I have taken this cubical box. Delta x, delta y and delta z represents its three axes, and v of x shows the direction of motion. So consider delta v to be the small volume element in the form of a box. So the small volume element delta v can be written as प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड. नाउ सी, इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं. पहले हम ये शो करने को कहा है हमें, ये इक्वेशन हम ये सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द मोशन ऑफ कंटिन्यूस मैटर है उसको डिराइव करते हैं. ठीक है. नाउ एज फ्लूइड मूव्स, वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी ऑल्सो मूव. अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जो वॉल्यूम एलिमेंट है डेल्टा वी वो भी मूव करेगा. सो डेल्टा वी विल चेंज विथ टाइम. द रेट एट विच डेल्टा वी चेंज विल डिपेंड अपॉन ऑल दीज थ्री, दैट इज चेंज इन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड. ये तीनों चेंज होंगे तभी तो डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज आएगा. सो द रेट एट विच डेल्टा एक्स चेंजेस विथ टाइम विल बी. सबसे पहले हम लोग डेल्टा एक्स के लिए देख लेते हैं. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी ऑफ एक्स. यू कैन से दिस एज फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज ये फाइनल था एंड ये जो हमारा एक्चुअल स्टार्टिंग में था, इनिशियल. Okay, and this can be written as d by dt of delta x, delta vx by delta x of delta x. Put this as equation 1. Now for delta y, the change will be given by d by dt of delta y is equal to v of y plus delta y minus v of y. So this can also be written as d by dt of delta y is equal to dou vy by dou y of delta y. Put this as equation 2. What we are left with? Delta z. So d by dt of delta z will be v of z, z plus delta z minus v of z for z, and be written as d by dt of delta z equals to dou vz by dou z of delta z. This is equation 3. So the total change in volume d by dt of delta v can be written as d by dt of delta x, delta y and delta z. Now this can be expanded in the following manner, that is d by dt of delta x, put delta y and delta z out of the bracket. Similarly for delta y, put delta x and delta z out of the bracket. Now d by dt of delta z, we will put delta x and delta y out of the bracket. See, now from equation 1, 2 and 3 we have derived, or we have got the value of these terms. So we will substitute it here. Dou vx by dou x of delta x and this delta y and delta z will be written as it is. Similarly for y, dou vy
by dou y delta y, this term as it is, for z dou vz by dou z delta x delta y delta z. This was from 1, 2 and 3. Now moving ahead, what we can clearly see is these terms are common, so we will take them out. So dou vx by dou x plus dou vy by dou y plus dou vz by dou z into delta x delta y and delta z. Now this term delta x delta y and delta z can be written as delta v. So in the next step, dou vx by dou x plus dou vy by dou y plus dou vz by dou z into delta v. Moving ahead, I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z into ivx plus jvy plus kvz into डेल्टा v. अब देखिए इस स्टेप में मैंने कुछ बहुत अलग नहीं किया है, बस ये डॉट प्रोडक्ट का आपको रूल पता रहेगा। यूनिट वेक्टर को जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई कैप डॉट आई कैप, दिस गिव्स 1, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यही टर्म मिलने वाला है सेम, बिकॉज आई इंटू आई 1 हो जाने वाला है। तो डो बाई डो एक्स ऑफ वी एक्स, अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ हमारा गया था डेल्टा वी, एंड दिस टर्म इज अवर डेल ऑपरेटर, so I will write del dot, this whole can be written as v, so v bar, and this delta v as it is. Okay, so this was what we were supposed to prove, show that d by dt of delta v is equal to del dot v delta v. तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा, इसको भी एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 4। अब देखते हैं हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द मोशन ऑफ कंटिन्यूस मैटर फाइंड करना है वो कैसे डिराइव करेंगे। फॉर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। So mass can be written as product of density and volume. So for small mass delta m, it's going to be density is represented by rho and delta v. Okay, so delta m is equal to rho delta v. Now the conservation principle implies that the mass should remain unchanged even if volume and density changes. That means the delta m should remain constant. If delta m is constant, then the derivative of a constant will always be 0. So d by dt of delta m is going to be 0. And what a delta m was? Rho delta v. So d by dt of, just substituting the value, rho delta v is also 0. Now solve this by UV rule. In this by UV rule, we will get rho d by dt of delta v plus delta v into d by dt of rho. This is equal to 0. Now put equation 4, label this as equation 5 and put equation 4 in equation 5. What was our equation 4? This d by dt of delta v is equal to del dot v delta v. So d by dt of delta v, I am going to substitute the value here, rho into del dot v delta v plus delta v d by dt of rho is equal to 0.
Now delta V is common in both the terms, so take it out of the bracket. We'll get rho into del dot V plus d by dt of rho, that is equal to 0. When this delta V will go here, it will become 0, so d by dt of rho plus rho into del dot V is equal to 0. This is our equation 6. Now as we know, so we will substitute this value in equation 6, that is in place of d by dt of rho we will write this term. So dou rho by dou t plus v dot del rho plus rho into del dot v is equal to 0. Okay, this can be written as dou rho by dou t plus del dot rho v bar is equal to 0. Now why this? Because del dot rho v is same as del into rho into del dot v plus v into del rho. So in place of this I have written this one, and this equation, that is dou rho by dou t plus del dot rho v is equal to 0. This equation is the equation of continuity for the motion of continuous matter. Thank you so much for watching.